The bodies of 5 civilians who were killed at Lilong, Qinghao in Manipur's Thoubal district on January 1 were laid to rest today with Islamic burial rituals and traditions at their respective places. Trouble mounts for the Aam Aadmi Party after the Delhi LG Vinay Kumar Saxena recommended an investigation by the Central Bureau of Investigation into the allegations of fake diagnostic tests prescribed by the Mahala clinics. Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal on Thursday claimed that the BJP wants to get him arrested before the Lok Sabha polls so that he can be prevented from campaigning. Indian Space Research Organization has now decided to collaborate with Elon Musk's SpaceX. India will launch a communications satellite using SpaceX's Falcon 9 rocket later this year. Now to news in detail. The bodies of 5 civilians who were killed at Lilong, Qinghao in Manipur's Thoubal district on January 1 were laid to rest today with Islamic burial and rituals and traditions at their respective places. The bodies were buried after a post-mortem was done at JNIM's hospital in Imphal. Meanwhile, Islam Makakcha, co-convener of the Joint Action Committee formed in connection of the incident, said that there was no communal clashes between Muslim and Meitei community. Therefore, he appealed both the communities not to post any communal comments on social media platforms. To bring a solution over the refusal of the Pangal's Manipuri Muslims to accept the 5 bodies for burial, Chief Minister Nongtombam Biren Singh held a meeting with members of the community's Joint Action Committee in the state's capital Imphal on January 3 and came to an understanding where the religious leaders and CSOs of Meitei Bangals have agreed to take the remains of the victims for their last rites. During the meeting, Chief Minister assured to give ex gratia of rupees 10 lakh each, suitable government job to the next of kin of the deceased, and rupees 2 lakh each to the injured persons. खुलाई पाइबा खरा लाग थोगनिंगदबा थोदो खरा थोखिबा अदुना मरम मरगा मिसिमिना खरा थोखिबा हाइरिबा थोदोक असिदा मरी लेनना सेमखिबा जेसिना चंगसिलकबा खोंजंगी मतुंग इन्ना ngarang honorable chief minister gi table da phaminadana yanaraba matungda ngasisi asiba sing adu lauraba matungda leiron chanba poloibagi matam loi hibagi tanja si laujaraga अखोइना सेमखिबा जेसीगी माइकैदगी मणिपुरगी म्यामदा मरुओइना मैतै पांगन हाइदना सखंगबिरिबा पांगन इचिनिनाव सिंगी मफमदा जेसीना करिगुंबा अपील अमखतंग तौजगे मदुदि मणिपुरदा लेमिनरिबा जाति फुरुप खुदिमक तंपाकता तांबिनरिबा जाति फुरुप खुदिमक मितोप अमता यावदे मितोपनी हाइदना कनागुंबा अमतना क्लेम तौबसु यारोय अदुना मरमरगा मितोप की वाफम सी तोकपीरगा अखोय मसेन अमतनी मैतै अमसुंग मैतै पांगन तंपाकता लेमिनरिबा जाति फुरुप असे अमतनी हाइदना खनमिनर. Meanwhile, the outlawed People's Liberation Army claimed responsibility for gunning down 5 members of the Pangal community on January 1. The outfit said its members had fired in self-defense after the residents of Lilong, Qinghao in Thoubal district attacked them for trying to take away a drug trafficker. Indian Space Research Organization has now decided to collaborate with Elon Musk's SpaceX. India will launch a communications satellite using SpaceX's Falcon 9 rocket later this year. It will be India's first partnership with Elon Musk's SpaceX as he wants to expand his other businesses in the country. The launch is scheduled for the second quarter of 2024, ISRO's commercial arm New Space India Limited announced. The GSAT-20 satellite weighs 4,700 kg, which exceeds the current highest spacecraft launching capacity of 4,000 kg of ISRO. NSIL said it will fully own, operate and fund the GSAT-20
high-throughput satellite offering a capacity of 48 gigabits per second. Musk, who is the chief executive of SpaceX and Tesla, is keen to bring his Starlink satellite broadband to India. He is also discussing an investment proposal for Tesla to set up a factory there to make electric vehicles. Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has claimed that anyone. He said the BJP wants to get him arrested. His biggest strength, though, is his honesty, he said, asserting that they want to malign his image through false cases and fake summons. The BJP's purpose is not to carry out an investigation. Their purpose is to stop him from campaigning in the Lok Sabha polls, the Delhi chief minister said. शराब घोटाला पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। We'll be right back after a short break, so stay tuned. डर मत, टाइगर है ना, ब्लैक टाइगर सीमेंट। घर जल प्रतिरोधक सीमेंट से नहीं बना तो पड़ेगा रोना। पानी घुसने से कंक्रीट कमजोर हो जाए। स्टार वेदर शील्ड सीमेंट खराब मौसम में घर वेदर प्रूफ बनाए। स्टार वेदर शील्ड जल प्रतिरोधक सीमेंट, वेदर प्रूफ घर। Hello Northeast, Physics Wala Guwahati is here for your dreams to be fulfilled as an engineer or a doctor with Physics Wala Vidyapeeth.
where aspirants are mentored by experienced faculties with personalized doubt classes along with recorded lectures for revision. अपने सपनों को दे पंख PW के संग। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफ़ी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। डर मत, टाइगर है ना, ब्लैक टाइगर सीमेंट। Welcome back. In what seems to be the first of its kind case in the world, the British police are investigating an alleged gang rape of a girl in a virtual reality game, New York Post reported. The alleged victim, identified only as a girl under 16, was wearing a virtual reality headset in an immersive game when her avatar, an animated representation of her, was raped by several men, New York Post reported, citing Daily Mail. Although she did not sustain any physical injuries, she may have suffered trauma similar to someone who had been raped in real life, police sources told the Daily Mail. There is an emotional and psychological impact on the victim that is long-term than any physical injuries, a senior officer similar with the case said. The UK authorities fear that it might be impossible to prosecute the accused under existing laws, which define sexual assault as physical touching in a sexual manner without consent. The investigation has also raised questions about whether police should be using time and limited resources to investigate metaverse crimes while struggling with a substantial backlog of in-person rape cases, according to the New York Post. But UK Home Secretary James cleverly defended the trailblazing VR rape prop. He acknowledged that it is easy to dismiss this as being not real, but the whole point of these virtual environments is they are incredibly immersive, the New York Post quoted cleverly as saying to the LPC platform. External Affairs Minister S. Jaishankar on Thursday arrived in Nepal for his first visit of 2024. He stated that he looked forward to the engagements of the next 2 days. Nepal Foreign Minister N.B. Saud received him at the airport. The two leaders engaged in conversation as they proceeded towards their car. In a post shared on X, Jaishankar greeted the country and said he was happy to be back in Nepal for his first visit of 2024. He is looking forward to the engagements during the next 2 days, he stated on X. Jaishankar is on a 2-day visit to Nepal from January 4 to 5. During the visit, he will co-chair the 7th meeting of the India-Nepal Joint Commission with his counterpart N.B. Saud.
The Joint Commission meeting will review the overall state of bilateral relations and various areas of mutual cooperation, according to the statement released by Nepal's Ministry of Foreign Affairs. Established in 1987, the Indian-Nepal Joint Commission provides a platform for both ministers to review all aspects of the bilateral partnership. Jaishankar will also call on the leadership of Nepal and meet prominent political figures, the Ministry of External Affairs said in a statement. We'll take another short break, so stay tuned for more news. We invest a lot on healthy living. Are we taking equal care to prevent HIV? Avoid risky behavior. Nowadays, everyone is purchasing Amrit Sam. Why won't they buy? Quality, the best. Price, the best. Technical service, that too is the best. And on top of that, the strength of CSH gel. Even Engineer Saab was talking about it. What is it? It is like Amrit for homes. See here, foundation, roof, lintel. CSH gel adds life to every dhalai. With Amrit Sem, your home becomes immortal. When the whole country is building with Amrit Sem, what are you waiting for, Janab? Amrit Sem powered by CSH gel. Har dhalai ki jaan. Welcome back. Trouble mounts for the Aam Aadmi Party after Delhi's Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena recommended an investigation by the Central Bureau of Investigation into the allegations of fake diagnostic tests. The tests were allegedly prescribed by the Mohalla clinics to benefit private labs. BJP MP Sutanshu Trivedi addressed the media on Thursday. He questioned whether there are CCTVs in the Mohalla clinics, and if there is, there must be footage of over 500 patients visiting the clinic in a day. तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है। अर्थात ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स सामने आए हैं कि जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है,
इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी हैं कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रोजेक्ट डायरेक्टर OLS आउटसोर्स लैब सर्विसेज। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, यह सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। And others of the OLS branch for non-compliance of the directions of the Honorable LG which could have led to the loss of exchequer। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेज करके टेस्टिंग करा दी गई। A detailed vigilance inquiry may be conducted to bring out the quantum of loss of the exchequer to the collusion of the director and support staff with the private agencies। अब जो उपराज्यपाल महोदय ने ये लिखा है और ये अब पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में, उसके बिंदु क्रमांक 33 पे देखें तो लिखा हुआ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट वर रिकमेंडेड प्राइमा फेसी टू द घोस्ट पेशेंट, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे। That's all for now. Keep watching Hornbilltv. Because sometimes news is more than mere information. And we all need a little more clarity under the details. About life, people and events that really matter. For individuals that demand reliable news. From reliable news organizations and credible and award-winning journalists. And how we look at the world. This is exactly the reason why we strive to serve you and the society. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it. We pursue events that are not only important to you but also useful for our life's perspective. And that's the primary reason Hornbilltv is here to fill that space. We are Hornbilltv. Cultural sustainability is an important issue that often gets overlooked. It refers to the idea of preserving and sustaining traditional cultures in the face of globalization and modernization. Sustainable tourism, alternatively, promises not only to support economic development in destinations, but also to facilitate cultural and environmental conservation in heritage sites around the world. Tourism has not always been the most sustainable endeavor. Some forms of tourism have even led to culturally and environmentally abusive and exploitative practices, from polluting to poaching. The World Tourism Organization defines sustainable tourism as tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of the visitors, the industry, the environment and host communities. Nagaland is also a hub of culture and nature, attracting tourists from everywhere to witness the land, nature, tourist sites and popularly known festivals like Hornbill Festival. With the age of globalization, tourism has become a way of cultural globalization and promoting green village culture. Our land is very naturally inhabited, and so tourism is also growing quite spontaneously, attracting travelers and tourists across the globe. And in order